Okay. Good morning, everyone. I hope you have understood the last lesson and whatever the doubts you have in your mind, you have noted down all the doubts in your notebook. I hope whenever we will meet in next class, we will try to solve all the doubts. Okay, fine. So today, what are we going to do? Today we are going to cover very important lesson that is related with telephonic interview, and after that we will discuss some common interview questions. Okay, let's see. So I will start lesson with the help of one picture today. So I'm going to show you one picture. Okay, first tell me, please see this picture. Take 10 seconds, see this picture nicely, and tell me what is happening. Yes, you are right. So the girl is in the room, maybe a boss, or maybe from the HR team. Okay, and she's talking with the client, or maybe customer, or may she is taking the interview of a particular employee, right? So she is taking interview of the particular employees. So normally what happens whenever we give interview or we take interview, we cannot see the person. हम उनको नहीं देख पाते हैं कौन हमारा इंटरव्यू ले रहा है या फिर कौन हमारा हमें इंटरव्यू दे रहा है, हम उनको नहीं देख पाते हैं बिकॉज वी आर ऑन द फोन, and we can just listen the voice. Okay, so try to understand that this concept, because person we cannot see each other, हम एक दूसरे को नहीं देख सकते. तो अच्छा होगा कि जब भी हम इंटरव्यू दें, टेलीफोन स्पेशली जब टेलीफोनिक इंटरव्यू दें, हमें तेज बोलना चाहिए. तेज लाउड. तेज लाउड का मतलब ये नहीं हमें चिल्लाना है. We are not going to shout. Shouting is different and speaking loud is different. Okay, so we don't need to shout, but yes, we have to speak loud ताकि सामने वाला पर्सन जो हम बोल रहे हैं हमारी बातों को, हमारे सेंटेंस को, हमारे शब्दों को अच्छी तरीके से समझ सके. How to prepare for telephonic interview? So whenever we are going to give interview or take interview, we have to prepare in advance. Okay, so try to prepare it, and let's see what are the points which we are going to do whenever we are going to discuss some telephonic interview. Okay, so how to prepare for telephonic interview? Obviously, try to sit on a place where you have less noise. कोशिश करें वहां बैठने की, उस जगह या स्थान पे बैठने की जहां ज्यादा शोर ना हो. ओके, इट कैन बी योर बेडरूम. आपका बेडरूम हो सकता है. इट कैन बी अ रूम वेयर वी डोंट हैव एनी नॉइस प्रॉब्लम. कोई ऐसा रूम हो सकता है जहाँ पे ज्यादा आवाजें ना हो और ज्यादा हम डिस्टर्ब ना हो पाए. अच्छा होगा आप ऐसे ही रूम में बैठे. मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. आराम से बैठे. आप खड़े होके भी बोल सकते हैं, आप बैठ के भी बोल सकते हैं, बट ट्राई टू अवॉइड स्पीकिंग while telephonic interview while laying on the bed. सो कोशिश करें या तो खड़े होके बोले, आप चल के भी बोल सकते हो. आप खड़े हो, आप रूम में इधर से उधर टहल रहे हो, आप बात कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो फाइन. आप एक जगह पे बैठे हो, यू आर सिटिंग ऑन वन प्लेस ऑन अ चेयर, दैट इज ऑल्सो गुड. और अवॉइड करें कि आप लेट के बात ना करें, बिकॉज व्हेन वी ले ऑन द बेड वी फील बोर, और फिर बोर होता है, फिर हमारे दिमाग में और कुछ चलने लगता है. तो ट्राई टू फोकस, स्पीक लाउड एंड ट्राई टू सिट राइट, एंड ट्राई टू स्पीक लाउड एंड क्लियर. थोड़ा सही से तेज बोलना है. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 10 important interview questions. Okay, so 10 very basic or important question we will discuss today. Okay, but in starting, before discussing the interview question, I would like to discuss some points. Before you start, get into the right stage of mind. Okay, तो लेट्स सी, जब भी हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करें, इंटरव्यू में जाएं या इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर के आंसर हम टेलीफोनिक पे दें या फिर फेस टू फेस दें, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. पॉइंट नंबर 1, हैव योर रिज्यूमे एंड जॉब डिस्क्रिप्शन इन फ्रंट ऑफ यू. whenever you go for the interview,
carry your resume, hard copy of resume. If you have soft copy, or if you have already mailed soft copy, that is good, but if you don't, try to keep 1 or 2 copies of your resume first. Second, answer in 2 minutes or less. Try to give all the answers. Whenever person asks you any question, try to give answer of particular question within 1 or 2 minutes. You can take 1 minute, you can take 2 minutes. Don't explain in detail. Like जब भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, या तो आप 1-2 मिनट के अंदर उसको बता दें, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है. Like he asked you very simple question, tell me about yourself, tell me about your hobby, and you start talking about a lot. अच्छा ऐसे था, मैं स्कूल में रहता था, सर बताया आपको क्या हुआ जब मैं स्कूल में था, मैंने ये किया वो किया. सो द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टिंग टू नो एवरीथिंग अबाउट योर पर्टिकुलर पॉइंट. ही जस्ट वांट्स टू check your communication level, he just wants to check your confident, he just wants to check your confident. Okay, so he is not interested in everything, he just want to know this point. So try to cover it within 2 minutes. Next, avoid negative phrases. Negative phrases, like whenever people ask you a question, we start talking like very much, बोलते तो हम ज़्यादा हैं ही, and sometimes we start giving such kind of example which are not connected with the particular question, which goes in negative. That is not good. The next is don't play victim to your circumstances, instead emphasize your solutions. Okay, sometimes what happen, whenever people take our interview, we start giving lots of excuses. Okay sir, आपने like वो पूछते हैं हमसे normally, आपने पुरानी जॉब क्यों छोड़ी, and we start blaming. हाँ, we start giving solution, we just blame. सर ऐसे था वहाँ पे, मेरे साथ लड़ाई लड़ते थे सर, मुझे टाइम पे सैलरी नहीं मिलती थी सर, ये होता था वो होता था, और सर ऐसा था वैसा था, इसलिए वजह से मैंने अपनी जॉब छोड़ दी. Okay, that is not good. So the interviewer think, if you can talk negative about your previous job, so it means in future जब आप इस कंपनी को छोड़ोगे तो नेक्स्ट कंपनी में जाके भी आप इस कंपनी की बुराई करोगे. हमारी कंपनी के बारे में भी आप फ्यूचर में बोल सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी पुरानी कंपनी के बारे में बोल रहे हो. ओके, सो ट्राई टू अवॉइड टेलिंग एनी नेगेटिव थिंग्स अबाउट और एनी नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट योर ओल्ड ऑफिस. नेक्स्ट, think about your voice, tone, pitch, pace matters. Okay, think about your voice. आप टेलीफोनिक पे हो या आप लाइव इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको अपनी वॉइस पे ध्यान देना है. वॉइस पे ध्यान देना मतलब आपको अपनी टोन पे ध्यान देना है कि आपकी टोन कैसी है, आप किस टोन में बात कर रहे हो. हाँ ठीक है, oh yes sir, my name is, it comes in tone. आप किस टोन में बात कर रहे हो. Like normally we use in Hindi one word लहजा, आप किस लहजे में बात कर रहे हो. तो try to use your good tone. Second, speech, pitch and pace. आप किस तरीके से वर्ड को खींचते हो और किस तरीके से आप वर्ड को स्लो बोलते हो, लाउड बोलते हो. क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसको हमें थोड़ा अच्छे से बोलना चाहिए. Like we have speak clear, right? So try to speak everything clear and loud, जैसे मैंने पहले ही बोला था. Next, interviews should be conversation, so ask questions. Interview should be a conversation. Like interview ऐसा होना चाहिए जैसे आप आपसे बातें कर रहे हो, right? Like question answer question ऐसे होना चाहिए कि आप नॉर्मली आपस में बात कर रहे हो, कॉन्वर्जेशन हो रही है, right? ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्वेश्चन आंसर चल रहा है. Like he ask you one question, you give answer, he ask you second question, you give answer, he ask you third question, you give answer. It should be not like that. The interview should be kind of a conversation. Okay, next, your body language is louder than your voice. This is very important. So if you remember in the lesson formal dressing and body language, we watched one video. In that video there was one person, he shake hands, he walk here and there, he saw here and there, दबा के उसने हाथ भी मिलाया था, अपने हाथों से साउंड भी किया था. So yes, I'm talking about the same video. So what happened in that video, the person did not speak anything, but because of his body language only we understood
whether he was serious or not. So that is very important. Boys and girls, जब भी आप इंटरव्यू में जाएं तो अपने आप को अच्छे से कैरी करें, जो भी आपने पहना है अच्छे तरीके से आप उसको, मतलब जो भी है, अगर आपने शर्ट पहनी है, पैंट पहनी है, आप चल रहे हो, बातें भी कर रहे हो आपस में, और जैसे है आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके रखना है, बिकॉज वी आर इन द प्रोफेशनल लाइफ, वी आर इन द ऑफिस, राइट? Next, so we will start now. We will start discussing some important questions which normally asked by the interviewer. The question number 1. This is very normal question. Tell me a little about yourself, or tell me about yourself. अपने बारे में बताओ कुछ. So there are the some tips. जब भी हम अपने बारे में बताएंगे, इंग्लिश और हिंदी, we have to see these points. This is your pitch. So start with your why. What is your mission in life? Tell a brief story about accomplishment that relates to your why. Close by telling your story back to the position. Yes. So tell me about yourself. So normally whenever person asks you about yourself, normally you can tell about yourself, your name, your age. Age is also not important nowadays. You can start with your name. You can tell about your address, normal, not full address, but you can say normally, like if you are living in Harkesh Nagar, say I am living in Harkesh Nagar. And after that you can talk about your a mission, like if you like anything you can talk about that also. So I'm going to give you one example. So if someone asks you, if interviewer asks you this question, tell me about yourself, so you can say normal, you can start with the greeting. Good morning sir, good afternoon sir, my name is Shanawaz, and I am 26 years old. I live in Okhla Jamia, and I have completed my masters. I have completed my MSW from IGNOU University. So this is fine, like name, where do you live, what is your age, or what is your qualification. अगर हम ये 4 पॉइंट भी बताएंगे अपने बारे में, that is also fine. We don't need to talk about our family here. Let's see what is the next question. Question number 2. What do you know about your company? Oh, this is very important. So whenever you are going for interview, it is good if you do your homework in advance. जब भी आप अपनी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं, so आप कोशिश करें कि आप पहले से ही उस कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ के जाएं. आप किसी से पूछ के जा सकते हैं, आप इंटरनेट की मदद से थोड़ा पढ़ सकते हैं उस कंपनी के बारे में. सो यू शुड बी नो इन एडवांस. आपको पहले से ही एडवांस में मालूम होना चाहिए कौन सी कंपनी है और कहाँ पर है, इनके कितने सेंटर हैं, कब स्टार्ट हुई, क्या काम करते हैं. So it will be good if you know in advance about the company. So if they ask you any kind of question related with company, so easily you can give the answer. So you don't feel embarrassed, you don't feel confused. So मैं आशा करता हूँ जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाएंगे किसी कंपनी में, तो आप पहले से ही अपना होमवर्क करके जाएंगे, आप पहले से उस कंपनी के बारे में नॉलेज, जानकारी, इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे. Let's see question number 2. Next question. So next question is, why should we hire you? This is very easy, very important, very formal question. So interviewer always asks, why should we hire you? There are many people. यहाँ बहुत लोग हैं, हम आपको ही क्यों लें? So in this, whenever you are going to give answer of this question, you can use some these tips like focus on delivering result and filtering into a culture. Start with how you connect to the company mission. Close with a story about when you contributed to a positive company culture. So why should we hire you? You can go with the company policy here. So आप पहले एडवांस में देख लें कि कौन सी कंपनी है और किस मुद्दे पे काम करती है, इनका मिशन क्या है आखिर. Like let me give you example. If I am going to give interview in आधारशिला, तो आधारशिला के पहले से ही हम आधारशिला के बारे में थोड़ा पढ़ के जाएंगे ताकि हमें एडवांस में मालूम हो आधारशिला के पिलर्स क्या हैं, आधारशिला किन चीजों पे काम करती है, ताकि whenever they ask you this question, why should we hire you, so you can give your answer related with this question. So I would like to join your company ma'am, or you should hire me because I like teaching,
राइट, बिकॉज टीचिंग यहाँ होती है. सो आई लाइक टीचिंग मैम, आई लाइक टू हेल्प पीपल एंड आई लव टू लर्न न्यू स्किल्स, राइट, क्योंकि हम स्किल, आधारशिला स्किल पे भी काम करती है. आधारशिला हमें लोगों की मदद करना सिखाती है, आधारशिला हमें एजुकेशन देती है, हमारी हेल्थ पे काम करती है. सो ट्राई टू कनेक्ट योर आंसर विद दीज पॉइंट्स. सो दीज आर द 3 मेजर पॉइंट्स in which Aadharshila works, right? Next question. What are your weaknesses? Oh, this is very very good questions, because we always talk about our strength, we talk about our skills. अच्छी बातें हम सब करते हैं, but whenever interviewer asks this question, what are your weakness? Oh, normally we can say, normally people say I don't have any weakness. मेरी कोई वीकनेस नहीं है. इट कैन बी इम्पॉसिबल. ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में हर इंसान परफेक्ट हो, उसकी कोई वीकनेस ही नहीं हो. इट इज इम्पॉसिबल. एवरीवन हैज वीकनेस. वीकनेस छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है. लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट्स वी कैन यूज व्हाइल टेलिंग द वीकनेस. यूज दिस क्वेश्चन टू शो योर सेल्फ अवेयरनेस. एक्सप्लेन दैट यू यूज टू dwell well on your weakness, but learn to embrace your strength instead. Close with example of strength you will bring to the position. This is very good. Self awareness. So you try to give answer. आप अपना आंसर, इसका वीकनेस का आंसर आप दे सकते हैं पॉजिटिव करके. अब पॉजिटिव कैसे करें, ये भी क्वेश्चन है. तो आप कोई ऐसी अपनी वीकनेस बताइए जो आपके पॉजिटिव साइड को शो करती हो. मतलब वीकनेस तो है बट कंपनी के लिए फायदेमंद है. तो ऐसी वीकनेस क्या हो सकती है? सर माय वीकनेस इज स्लीपिंग. सर माय वीकनेस इज ईटिंग फूड. सर माय फ्रेंड इज माय वीकनेस. सर माय फैमिली इज माय वीकनेस. ओ दिस इज नॉट. सो अगर आपको अपने दोस्तों से दूर कर दिया जाए, आपको फैमिली से दूर कर दें, या आपको अगर नींद आएगी तो आप ऑफिस में सो जाओगे. आप अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकते, दोस्तों से दूर नहीं रह सकते, तो जॉब कैसे करोगे? सो ट्राई टू अवॉइड टेलिंग ऑल दीज काइंड ऑफ वीकनेस. ये सबकी वीकनेस होती है, तो ये नहीं बतानी है. नॉर्मली यू कैन से, like I would like to give you 1-2 examples. The first example can be, जो मैं अक्सर बोलता हूँ और जो है भी, ये सच है, this is my weakness. Like whenever people ask me what are your weakness, so my weakness is not avoiding task. I like to complete all the task on time anyhow. जो भी मुझे कंपनी टास्क देगी, मैं हमेशा, चाहे मुझे लेट हो, चाहे मुझे जल्दी हो, चाहे मुझे मेरी तबीयत खराब हो, चाहे दिन हो, रात हो, सर्दी हो, मैं सारे काम टाइम पे पूरे करने की कोशिश करूंगा. दिस इज माय वीकनेस. ये तो मेरी वीकनेस है, बट सेकंड, इफ वी सी फ्रॉम द सेकंड साइड, दिस इज द स्ट्रेंथ. ओके, कंपनी की तो ये स्ट्रेंथ है, उन्हें ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जो उनकी कंपनी की मदद करें. सो इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हो. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question, tell me about how you overcame a conflict at a work. So here the person is asking you, कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपके ऑफिस में, या पुराने ऑफिस में, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपने अकेले फेस की हो, या आप उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके आगे बढ़े हो. So the question is about that. Tell me about how you overcome a conflict at work. या फिर आपको ऑफिस में कोई कॉन्फ्लिक्ट मिलता है, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो आप उसको कैसे फेस करोगे? क्या आप रेडी हो फेस करने के लिए प्रॉब्लम? बिकॉज प्रॉब्लम तो आनी है, बिकॉज ऑल प्लेसेस आर नॉट सेम. प्रॉब्लम्स विल बी देयर हमेशा. स्टार्ट बाय मेंशनिंग दैट यू डोंट हैव एनी मेजर कॉन्फ्लिक्ट दैट कम टू माइंड. Then tell a story about a time when you overcome a challenge. Instead, close with asking the hiring manager how they usually resolve conflicts with their team. Okay, so what you have to do, first think about your major conflict. Okay, सबसे पहले हमें सोचना है कोई ऐसा conflict जो आपके हिसाब से सबसे बड़ा था और आपने सच में ही उसको ओवरकम किया है, सच में ही उस कॉन्फ्लिक्ट आपने फेस किया है और अपनी मदद से या फिर किसी की मदद से आपने सॉल्व किया है. ओके, व्हेनेवर यू टेल अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट, ट्राई टू टेल इन अ स्टोरी एंड टेल द चैलेंज, व्हेन एंड टाइम, कब था, कहाँ था, क्या चैलेंज था और आपने कैसे सॉल्व किया. ओके, रेदर देन आस्किंग द क्वेश्चन, उनसे पूछने के अलावा, सर आप होगे तो आप क्या करोगे, सर इस प्रॉब्लम में आप होगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सर ये प्रॉब्लम थी मैंने तो बीच में छोड़ दिया. तो ये नहीं बताया था. आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट लेना है कि आपने
कैसे कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया. कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी हो सकता है, लाइक योर फ्रेंड हैड अ प्रॉब्लम विद यू, यू सेड सॉरी टू हिम and you resolve the conflict. Now this is about at a work. Sir, if I get any kind of task or any kind of problem in the office, I will discuss with my colleagues, I will discuss with my manager instead of complaining to the boss. Don't complain to the boss. First discuss in personal level, discuss with your friends, your colleagues. If problem is not solving after that also, then you can go with a higher authority, right? Because problem solve होनी चाहिए. Next, what are your salary requirements? Okay, normally, अक्सर. Okay, so sometime interviewer ask this question in the starting of the interview, like एक दो question के बाद ही. Sometime interviewer ask this question at the last. And one more thing, if the interviewer is asking you about salary, it means you have lots of chances. आपके चांसेस ज्यादा हैं जॉब मिलने के. सो बी अवेयर. हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डू योर रिसर्च ऑन www.glassdoor.com and know your range. Do not be the first to offer a number. Explain that based on your skills you would expect fair market value. Then ask them what the position pay. Okay, so what you can do, whenever the person asks you about your salary expectation, you can give answer not in number. Avoid using numbers like sir I want 10,000, sir I want 15,000, sir I want 30,000, like 30, 10, 15, 8, 12, 15, 1 lakh, 1, 20. These are numbers, boys and girls. These are numbers. Do not be the first to offer a number. Don't show the number कि मुझे इतने चाहिए पैसे. Especially when you are a fresher. You are a fresher. You don't need salary. You need experience because we have a resume. और if you remember जब हमने resume बनाया था, when we made the resume, हमने उसमें fresher लिखा था. We wrote the fresher there, right? So try to write some experience in your resume as soon as possible. So don't focus on the salary first. Focus the work. Focus in the company. Focus in your resume because you are going to learn something from your job, new job, right? Not only salary. Fine. So try to give your answer like, sir, I think you can give in this manner your answer. Sir, I believe, sir, I think this company will pay me good salary and I hope you will give me a good number of money, so which can help me and my family to survive. आप ऐसे बोल सकते हो. बट इफ दे आस्क यू एट द लास्ट, उन्होंने पूछ लिया भाई आप बताओ हम तो इतने ही दे सकते हैं या हम इससे ज्यादा नहीं देंगे, सो यू कैन गो विद दैट बिकॉज इफ दे आर गिविंग एज अ फ्रेशर, इफ दे आर गिविंग यू 10,000 और 8,000 or 12,000, it is fine because as a fresher it is good. Because when I was fresher, be frankly, जब मैं fresher था, from my first job I got 7,000. मेरी पहली जॉब 7,000 की थी. So then it start increasing, right? पहली जॉब से 7,000, फिर 13,000, फिर 15,000. So जैसे जैसे like मेरा experience बढ़ा, then according to my experience my salary also improved. So I like that. Experience के साथ साथ salary भी बढ़ जाती है अपने आप. Not in a fresher. Okay. So the next point is, what are you looking for in a position? So whatever the position, this is a very important knowledge. Like whenever you go for the interview, you should know the position first. Sir, what kind of job do you want? Sir, I want to work in office. Office में काम करना है. Sir, I want to do job related with computer. Computer से related job करनी है. Oh, this is not good, boys and girls. Like computer में तो हजारों job होती है. We have lots of jobs, lots of position. Be specific here. आप कौन सी पोजीशन के बारे में बात कर रहे हो? कंप्यूटर की जॉब तो करनी है, बट कौन सी जॉब करनी है? टीचर तो बनना है, बट कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनना है? डॉक्टर तो बनना है, बट कौन सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना है? बी स्पेसिफिक. Know the job description. Highlight the top job responsibilities that attracted you to the position. Ask them what they are looking for the next employee. First, know the job position. So
if you already know कि position क्या है, that is well and good. But if you don't know, you can ask them, sir, can you please tell me what is a job position? कि जॉब पोजीशन क्या है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? सो यू कैन आस्क अबाउट दैट, और यू कैन हाईलाइट इन द रिज्यूमे, हाईलाइट द टॉप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट रिलेटेड टू योर पोजीशन. आप अपनी स्किल बता सकते हैं इसमें थोड़ा, तो ताकि आपकी जॉब से हेल्प हो. नेक्स्ट, 5 क्वेश्चन टू आस्क. So in the normal question, like first one, what is the these are other 5 questions which are very important. What is the overcome purpose of this job? What critical piece of the puzzle will this person fill for you? What does success look like in this position? What are your biggest priorities for the department over this year? How are employees evaluated? What is your management style? Okay, so these 5 questions are related with the job. Like अगर आपकी marketing की job है या आपकी evaluator की job है, so they will ask you this question also. But I would like to discuss this second point. What does success look like in position? So success क्या है? किसी भी जॉब, किसी भी कंपनी में सक्सेस क्या है? कैन यू से यू आर द सक्सेसफुल पर्सन? क्या आप बोल सकते हो आप सक्सेस हो, या इस जॉब में सक्सेस हो, या फिर किसी कंपनी के लिए क्या सक्सेस हो सकता है? सो यू कैन ट्राई टू कनेक्ट this with your skills, like I love to work in a team. I am good in communication, I am good in English, I can convince people very easily. So with the help of these points you can connect what does success look like in this position. Okay, so good luck. Thank you everyone. I hope you learned, you enjoyed this video, and best of luck for your interview. And I hope you have written your doubt also, and whenever you will come to the class, please come with your notebook and with your doubts. I would like to clear your all the doubts in the class. Thank you very much. Have a nice day everyone.